Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Apologies for the delay. सब लोग keep the clean charts. We will start the screening in 2 minutes. Good morning, Varun. Good morning, Nilesh. Good morning, Mali Babu sir. Hit the like button, guys. एक सेकंड है, थोड़ा लैग हो रहा है. Give me 1 minute. Guys, एक बार refresh कर लेना. We will start. So at the current scenario on a daily time frame, what do you notice? Draw out your previous demand. जैसे ही previous demand draw होते हो 50% lineup मार कर लेना. Right? And now at the current scenario, what is the market have done? Buyers allocate किया. Continuity में VIX किस तरफ pressure build है, right? Market has created a pressure of buyers, right? हर एक candle में अगर notice कर रहे हो, there is only buyers pressure. Sellers pressure का कब देखने को मिलेगी? जब एक liquidity allocate होगा. And वो liquidity कहाँ पे allocate होगी? On the break of this candle. राइट, कल के दिन की हाई को मार्क कर लो. Right, so after marking your yesterday's high, what is the next thing that you have to be noticing? Till where and how will I be looking for a next plan of action? Come down to 4 hours. What is 4 hours indicating you? 4 hours is indicating a movement which is been in the direction from the previous supply till today. That is from March 2nd till today. Okay.
mark out the supply from the buyer's start point. This is the first buying pressure. Multiply it. This is the second buyer's pressure. Excuse me. This is the third buyer's pressure. Now, what do you see? Is the market sustained above the level? No, not yet. When the market is not sustained above the buyer's level, what is the next thing that you will do? You will look to add a mathematical concept 2.0. Where will you add that? At the current phase, what do you see? आज का दिन का daily candle, what is it saying? Daily candle is saying that it is not bullish nor bearish. It's still in an indecisive movement, correct? Body is small, wicks are more. So in this scenario, what is the first thing that you will mark? Okay, this is my high point, this is my low point, and this is my retracement point, right? And with that, allocate the levels, right? When you allocate the levels, what is the next thing that you will be looking for? Swing high. What is it? Swing high is 2. Sir, audio clear but lag on screen. Just a second, guys. Okay. Yeah. So what we'll be doing, we'll be taking a retracement point of action, the subtractive formulative mathematical concept ka 2.0. So in this scenario, what is the first thing that I'll be noticing? The first thing I'll be noticing is I'll take my swing high, which is 2876.850 minus 2832.720. What is the formulative number? 44.13. Right? When the formulative number is 44.13, what is the next step that you guys will do? The next step is the retracement point 2859 point direction positive plus 44.13, right, into 1.618. What is the number? So our golden ratio target is hit. Once the golden ratio target is hit, what is the next thing that you will be looking for? You will be looking for a next point of action, which is 2. So in this scenario, what we'll be doing? 2859 plus 44.13 into 2. What is the next target? 2947. So mark out 2947 over here. Okay. Once 2947 is marked, right? In the current scenario, what is the thing that you will be looking for? You will be looking for an overall surplus. How do you look for an overall surplus? The overall surplus is one thing that you have to know where exactly the market is going to take a reversal from, right? How will you understand that? You will be understanding that same thing through the mathematical edge 1.0, right? How will you draw the mathematical edge 1.0? Through the square root formula, right? Let's do the square root formula over here. The square root formula is square root of 2832.720
720, what is it? 53.223 plus decimals. We will add 0.618, right? You will get another decimal with 53.84130. So in this scenario, once we get that number, we will raise the exponent by 2, right? What is the target that you guys are getting? The target one you guys are getting is 2898. The 2898 target is completed. Market is above that level. So which is the next level of the edge one you will be taking? कौन सा level लोगे? The next level will be 2859, the retracement point. The square root of 2859 is 2346, right? Plus 0.618 is 24.087, right? So we will add this. Once the add number comes in, then we will raise the exponent by 2. So now what is the next target that we are getting? 2925. Is that 2925 target hit? Yes, 2925 target hit. What is the next surplus number that you have to calculate? The next surplus number that you will be calculating is 2881, right? Let's take in square root exponent. 2881.980, bracket close. We'll get a decimal. With that decimal, we'll do 0.618 addition. What is the number? 54.3020. With that, we will raise the exponent by 2. So now, what do we see? Our major reversal area is at 2948. And where does 2948 looks like? The 2948 will look like at the range of our mathematical calculations 2.0, right? So all the numbers are matching. Our mathematical concept 1 matched, our mathematical concept 2 matched in this target. Then we raised the number. From that number, the exponent raised. With the exponent raised, we got our second target. Now, the third reversal point of action se jab hum calculate kiye, what is the number that we got from mathematical concept 2.0 and 1.0? The number is 2947 and 2948. So this is the next plan of action that we will be focusing on. Okay. So till here, we will look for the next targets. So at the current scenario, do you have to look for a trade? Definitely a small trade which is 50-60 pips, no doubt about it. But again, the holding trade, when you will be looking, once you get an inducement built or once you get an insider candle. Okay. So till then, 4 hours mein long ke liye there is no actions allotted at the current scenario. Suppose this, what is the next thing that you guys have to look for? Let's come down to 1 hour. What is it saying in 1 hour? Market says, कल के दिन में जो मुंह चाहिए था मैं वो मुंह आप लोगों को दिया, राइट? उसके बाद जो जो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में जो ये ब्रेक के ऊपर बैठे ना, ऑन दिस ब्रेक पीपल हु सैट, उनका एसएल लेने के लिए अभी आ रही है, राइट? इन द सिनेरियो एसएल इज ऑलरेडी टेकन, बट one more thing you guys have to notice, right? Do the market at the current conditions of 1 hour looks like a movement which has been built? No. In the same scenario, do you guys notice that market में volume है? No. कल volume आया था इस point of actions में. 1, 2, continuity, build. Once the reversal action created, what did the market do at this place? Market ने क्या किया इस point of action में आके? Market ने इस point of action में आके it created a drop, right? Do you notice the volume? Post the volume, what is that one thing that you are noticing at this range? The wick generation. किस तरफ का wick generation ज़्यादा था? Sellers side का. So at this point of action, the market started to build a seller's position, right? So either seller position build हुई, right? उसके बाद next candle में आके यहाँ पे sellers position build हुई, right? If you're noticing, the wicks किस तरफ का ज़्यादा है? Where the market
is having a major wick creation उस तरफ का point of action build कर रही है. जब ये point of action build कर रहा है, what is the next thing that you have to be looking at? The next thing you have to be looking at, which side of allocation will be the appropriate one at the current scenario. उसके लिए in 1 hour, what do you notice? No doubt, target hit हुआ, बिटाया, एसएल गया ऊपर, फिर से जो पुल बैक में बिटाया उनका एसएल. हमें क्या देखना है इस पॉइंट ऑफ एक्शन में? हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, दैट डू वी हैव ए सर्कुलेटिव वॉल्यूम. सर्कुलेटिव वॉल्यूम आज के दिन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, राइट? डेफिनेटली यस, यू कैन लुक फॉर ट्रेड्स शॉर्ट बट नॉट फॉर ए वेरी लॉन्ग होल्ड. इस सिनेरियो में व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप दैट विल बी लुकिंग एट? यहाँ पे हम ड्रॉ आउट करेंगे? नहीं, हम ड्रॉ आउट नहीं करेंगे. यहाँ पे हम जो पीओआई बिल्ड कर रहा है 30 मिनट्स में, वो 30 मिनट्स का पीओआई का इंटरनल लिक्विडिटी लेंगे, राइट? सो कितना ड्रॉप आएगा मुझे? जितना मेरा प्रीवियस डिमांड अलोकेट यहाँ पे होते हुए दिखी है, दैट विल बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन दैट आई विल बी लुकिंग फॉर. In this scenario, this is my demand. So this will be my first plan of action in short, right? So in this scenario, do we have a retracement and an inducement at this point of action? Definitely yes, we do have a inducement and a movement, right? If you notice, partner 1, partner 2, right? And the continuity. But यहाँ पे इस सिनेरियो में पार्टनर 3 क्रिएट नहीं हुई थी, मार्केट ऊपर गई, ब्रेक, sustained inside the candle. What did the market do? Market followed a inducement 3 pattern, right? So inducement 3 pattern क्या है? When the market generates an inducement, takes a break, sustains inside that range and continues the fall, right? In this scenario, the bearish movement, this is the pattern what it looks like, right? Inducement के videos में clearly बोला है, same चीज यहाँ पे follow हुई है कि नहीं हुई है? If you notice, what did the market follow? The same thing. With that plan of action, what should be your next movement looking like? The next movement of yours should be, ट्रेड नहीं लिया है, वेल एंड गुड, वेट करो, अभी तो दिन शुरू हुई है. ट्रेड लिया है कहाँ तक? 2910 तक. If the movement doesn't move in the direction, right? What is the next thing that you will be looking for? The next thing you will be looking for is a spectrum allocation of the retailers. स्पेक्ट्रम अलोकेशन ऑफ रिटेलर्स कहाँ पे दिखने को मिलेगी? 15 मिनट, right? In 15 minutes, what do you notice? In the range as well, market created a inducement 1, partner 2 and break, right? यहाँ पे क्या exactly with a retracement follow कर रहा है inducement का, right? Is it following the inducement pattern num? Sorry, if it, क्या यहाँ पे मार्केट इंड्यूसमेंट पार्टनर 1 को फॉलो करके चल रहा है, लेवल 1 को? या इज इट फॉलोइंग और नो? इट्स फॉलोइंग, राइट? सो इंड्यूसमेंट ब्रेक किया, सस्टेन किया, कंटिन्यू आ रही है, राइट? एंड विच पैटर्न इज दिस? दिस इज इंड्यूसमेंट 1. हाउ डज इंड्यूसमेंट 1 लुक? इंड्यूसमेंट, break, retrace, continue. Is it following the same thing over here in 15 minutes? So till where you will be looking the target? Till the previous demand allocation. इस सिनेरियो में हमारा प्रीवियस डिमांड अलोकेशन कौन सा था? ये पॉइंट ऑफ एक्शन था, करेक्ट? सो वही पॉइंट ऑफ एक्शन मार्केट अभी फॉलो करके चल रही है, जो कि आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी. ओके?
Any doubts in gold, guys? Good morning, even. होप अभी लैग नहीं हो रहा है. 2948. Correct, sir. Mali Babu, sir, you have said it right. The next level is calculated to 2945. Okay. So, कोई doubts है? Doubts है तो बता देना. I'll clear it and move to BTC again. No, no doubts. Okay. So we'll move to the BTC. So in BTC, what is the one thing that you guys have to be looking here? One major focus, what it should be? The one major focus that should be is market continuity में जा रही है. 98,000 का target हमारा है, right? What is the plan of action that you have to be looking here? Right? The major plan of action that you will be looking here is on the volumes. What do you notice? The major spike of the volume started in this candle, correct? उससे पहले वॉल्यूम यहाँ पे फुल नील था, मतलब एक रेंज में थी. वॉल्यूम इंक्रीज एंड इंडिकेशन कहाँ पे शुरू हुई? In this current candle. In this candle, what you have to do? Do we have a buyer's position? Wick generate हुआ है. Next candle हल्का सा but wick generate हुआ है. And when the volume break the bar of this candle, what do you notice? Entirely the market was biased on towards the position of the buyer's allocation, right? यहाँ पे buyers allocate हुए, no doubt. What is the next plan of action that you will be looking for? The next plan of action is first target कहाँ तक आएगा market? Internal liquidity कहाँ पे है? यहाँ पे, right? Movement allocation कैसे build होगी? जितना हमारा स्पेक्ट्रम रेंज है, राइट? इंटरनल लिक्विडिटी का स्पेक्ट्रम रेंज होता है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ एक्शन टू द ब्रेकर पॉइंट ऑफ एक्शन, जो कि बायर्स अलोकेशन के ऊपर जो हैमर आप बोलते हो उसके ऊपर वाला जो साइड ऑफ एक्शन है ना, उधर तक स्पेक्ट्रम अलोकेट होती है. मतलब ऊपर जाती है मार्केट, ऊपर जाके उस पॉइंट ऑफ एक्शन से मार्केट एक रिजेक्शन लेती है. कहां तक? जहां तक मार्केट आके एक पॉइंट ऑफ एक्शन में रुकती है. वो पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ पे है? वो पॉइंट ऑफ एक्शन इज ऑन द टॉप ऑफ योर buyer's allocation candle of the body, right? This is the major allocation point. टारगेट कितना आएगा? फर्स्ट टारगेट अलोकेट होगा डेली के हिसाब से, दिस वन which will be allocate at this range, right? आप ये रेंज ऑफ अलोकेशन डाल के बैठ सकते हो, या आपको सर्कुलम में चाहिए तो यू कैन टेक एन एक्शन ऑफ द विक अलोकेशन ओनली, जो कि आपको क्या नोटिस कर रहा है? मार्केट यहाँ पे जो विक क्रिएट किया है ना, उसी को अलोकेट करके लेके चल सकते हो. एंड इन दिस सिनेरियो व्हाट डू यू नोटिस? Where is it currently? The market is in the daily candles allocation point.
In this scenario, what is the next thing that you have to be following? Let's come down to 4 hours. In 4 hours, what is the one major thing that you have to focus on? Okay, do we have an inducement? Yes, right? So when you have an inducement, what is the next plan of action that you will be looking for? Okay, this is my point of action. One, I will multiply the moment and allocate it over here. Where is my next plan of action looking like? My next plan of action is looking where the internal liquidity was generated. At this range, what is the next thing that you have to look? Okay, चलो ये तो बहुत बड़ा टारगेट है, मेरे को डर लग रही है. सप्लाई को छोटा कर लो. फर्स्ट सप्लाई, राइट, उसके पहले वाला डिमांड मार्क कर लिया. अलोकेट द सप्लाई, जितना रिजेक्शन आएगा उस पॉइंट ऑफ एक्शन से फिर से अलोकेट करके चल सकते हो. सो एट दिस सिनेरियो व्हाट डू यू नोटिस? मेरा डेली कैंडल का फर्स्ट रेंज ऑफ एक्शन जो है वो अभी इधर कंप्लीट हुई है, राइट? Abhi, what is the next plan of action? I have a movement allocated at 93,612. So what is the next thing that you have to be looking here? The next thing you will be looking here for a mathematical calculation, right? So for your understanding, let me mark the swing high, the swing low, and the retracement point. With this, what is the first thing that you have to draw out? The first thing that you will draw is the swing high and swing lows retracement value, sorry, formulative value. For that, our swing high is 88,967.52 minus 81,500. What is the formulative number? The formulative number what we are getting here is 7,467.52, right? Now, what is the retracement point? The retracement point here is 86,334.53, right? Direction bullish. Add the quantity, then what is the formulative number? 7467.52 into 1.618. What is the target that we are getting? 98,416. Let's allocate 98,416 at the current scenario. Okay, so we have got one number. Let's not move to the next number, which is 2, right? So at the current scenario, what we will be looking here, golden ratio hit होने दो, hit होके continue होता है, then intermediate ratio डालेंगे, उससे पहले नहीं. So here, what is the next plan of action that you guys have to be looking at? 1 hour. क्या मेरे को एंट्री दे सकती है मार्केट या नहीं, right? And if you notice, Nilesh, you were saying, right, Trishul build hui, Trishul build hoke market continue hui. Do we have a Trishul at any point of action to look for a reversal and external liquidity to look for a reversal? No. So till the time the next threshold isn't built in 1 hour, we won't be looking for a reversal. Definitely, chota chota retracement leta rahega, no doubt about it. But reversal देखना है, we need a threshold which is an external liquidity point which looks like for a bullish movement like this and for a bearish movement like this. If this build, yes, we will change our directions, not prior to that, right? So 1 hour के हिसाब से what is the next thing that I will be looking for? Okay, let's draw out the major allocation points, right? मेरा first major allocation यहाँ पे drawed है. Yes, definitely drawed है, right? So with this, what is the next thing that I will do? I will circulate this supply. When I circulate the supply, I know where exactly the next target is looking like. So my next target is 93,494. Okay, you guys can mark that level using the horizontal tool, but I am not marking here. Next, direction पता चल गया. Okay, late join हुए हो, right? Exact entry point नहीं मिला है, कहाँ पे बेच सकते हो?
every retracement you can look for a trade. In this scenario, this was my high point, right? So this high point will get extrapolated to the next point, which is here, right? So how much will be my next retracement? अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो कितना रिजेक्शन लेगा? आपके पास दो पॉइंट ऑफ एक्शन है 1 आवर में. Point of action number 1, point of action number 2. Correct? So in this scenario, what is the next thing that you will allocate? Okay, चलो मेरा first retracement इस point of action से आएगा तो इतना, second retracement आएगा तो इतना. Okay, so this is your way of allocating the next point of actions in 1 hour, right? So यहाँ पे मेरा retracement allocate हो गया. What is the one next thing that I'll be following here? Okay, क्या आप directly बैठोगे? नहीं. Here you will look for one major thing. Inducement build होने दो या insider candle generate होने दो. अगर दोनों में से एक होता है, then definitely I am interested. Else my trade will be going towards the long itself. So 1 hour तक clear हो गया. Let's come down to 30 minutes. What is 30 minutes indicating? 30 minutes is indicating a biasness in the volume. If you notice, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में जितना वॉल्यूम बिल्ड हुआ था, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में जितना वॉल्यूम बिल्ड हुआ था, राइट, इज इट हायर देन आर 1 आवर वॉल्यूम्स? राइट, मेजर वॉल्यूम यहाँ पे 1 आवर का जो है उसको ब्रेक किया? नहीं किया, राइट? डेफिनेटली 30 मिनट्स में किया. एंड व्हाट डज रिटेलर्स फॉलो? अगर मार्केट नीचे आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, राइट, सो रिटेलर्स विल थिंक ओके ये और नीचे जाएगा. So in this scenario, what did the market do? Market trapped. ट्रैप करने के बाद इस पॉइंट ऑफ एक्शन में आके ओवरऑल मार्केट ने एक रेंज में आ गई वॉल्यूम. व्हेन मार्केट एक रेंज में आ गई, what is the next step that you have to be looking here for? The next step you will be looking here for a spike in the volume. रिवर्सल देखना है, स्पाइक देखो. अगर आपको 1 आवर में वो स्पाइक दिख गया एंड कैंडल में विक नीचे के लिए बनी, मतलब the wick creation should be like this and a body closure here somewhere, right? समझ लेना उस पॉइंट ऑफ एक्शन से मार्केट रिवर्स होने वाली है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके रिवर्स होने वाली है. बट इन सिनेरियो इन दैट हुआ है नहीं हुआ है, राइट? सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन? वेट, पेशेंसफुली सिट एंड वॉच, जो बीटीसी में ट्रेड करता है. कमिंग डाउन टू आवर executing point of action, 15 minutes. What is that one thing do you notice? Do we have a group inducement here? Yes. 1 2 3 1 2, right? So in this scenario, जितना हमारा movement of allocation है, क्या उतना ही रिजेक्शन लिया मार्केट ने? In this, what is the calculation that we'll be looking for? The inducement range. Where is the inducement range? Partner 1, partner 2, partner 3. उसके बाद एक स्पाइक, रिट्रेस, ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा रिट्रेसमेंट ले लिया, बट रिट्रेस लेके कंटिन्यूटी में गई थी, राइट? नो डाउट अबाउट इट. So what will be the range? Will you take this as your retracement point or inducement range as your retracement point? You will definitely take a inducement range retracement point, right? Because major 1 hour का and 4 hours का retracement point हमने draw कर लिया है. What is the next plan of action? Let the market give the indication. अगर यहाँ पे sustain नहीं होती है, then definitely market will come down to take this two liquidities. Okay. So if that liquidities are taken, then we will look for the next point of action of rejection. उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं. Any doubts, guys? BTC में? Can you please tell about Nifty, sir? I am in P position. Coming to that, man. Coming to that.
Anyone has any doubts? BTC में किसी को भी कोई डाउट है? एक सेकेंड, इंडियन मार्केट का चार्ट लोड हो रही है. Dhan is working slow. Yes, right. Very slow. Nope. यार नितिन, रनिंग कैंडल्स में क्यों बैठते हो यार ट्रेड्स? व्हाई डू यू सिट इन रनिंग कैंडल्स? Right? You didn't use the mathematical concept numbers, is it? Beautiful rejection, guys. Bank Nifty target hit करके rejection लिया है. That's great. कहाँ पे बैठा है? 2200. Why are you in out of the money? Why are you not in the money or at the money? This is high expectations. Guys, let's do the screening for Nifty and Bank Nifty. At this scenario, 15 minutes, what do you see in Bank Nifty? Right? Is point of action pay. We have two allocation points. Right? Allocation point number 1, allocation point number 2. कल के दिन ये सब targets hit हो गए थे. Even then, let's calculate it again. Okay? So in this scenario, what is the first thing that you will be looking for? 22,103.40 minus 21,963.50. Right? Golden ratio target hit ho gaya tha. No doubt. With that, what is the next thing that the market do? Did the target hit of regiment ratio as well? Let's check into the perspective. Right? What is my retracement value? My retracement value is 22038
0.85 plus 139.9 into 1.618. What was the target? 22,265. कल के दिन ये target hit हुई थी यहाँ पे. Okay. First target was hit. What is the next thing? Next thing we'll look for the same thing with what 22038.85 plus 139.9 into 2. 22,318 hit हुआ. 22,318. Yes, hit हुआ. Right? I'm just marking out. ये सब हो गया है कल के दिन में. Now, Indian sessions में कितना ratios we do it through? We do it through 3 ratios. 2 ratio खत्म हो गई. What is the third ratio? The regiment ratio 3. Let's do the regiment ratio of 3. Alright, so which is 22038.85 plus 139.5, sorry, 139.9 into 3. Oh, something wrong. I did something. Right? So जैसे ही हमने पुराना numbers को हटाया, what is the new values look like? Regiment 3 रखने के बाद, we will be looking for a next plan of action. How will the next plan of action look like? Let's do the math. Right? 22,266.40 minus 22,068.05. What is the formulative number that I'm getting? 198.35. In this one, what is the next step that you will be doing? Retracement value 22,212.60 plus 198.35 into 1.618. 22,553. Where is 22,553? This is my next plan of target. अगर market यहाँ पे rejection नहीं लेती है तो, right? With this plan of action, what is the next thing that I will be looking for? The next thing that I will be looking for is an allocation of intermediate level, which is 2. And how does that numbers look like?
22212.60 plus 198.35 into 2, 22,609. Right? These are my new level of targets that I will be looking for. In the scenario, एक चीज notice करना. What is that? You guys need to have a movement of allocation. अगर यहाँ पे notice कर रहे हो, आज के दिन के सर्कुलम के हिसाब से, what are your previous demands which has been built at this range? The previous demand was built here. On the circulum of this, the movement was taken rejection. Right? Point of action 1, point of action number 2. Double supply completed, market is taking the rejection. अगर ये यहाँ पे sustainability दिखाई, then what will be my first target? Then I will take this calculation and allocate it towards here. उससे पहले I am not interested in Nifty because मेरा कल का दिन का ट्रेड क्लोज हुआ है आज के दिन में गैप अप ओपनिंग पे. Will I be hurrying? No, I won't be hurrying. The same thing with the Bank Nifty, right? Bank Nifty exactly target hit करके rejection लिया है. So rejection लेने के बाद what is the next step that I'll be looking for? I will be looking for a next point of action when the allocation is being shown. Allocation कब दिखाएगा? जैसे ही एक point of action यहाँ पे build होने के बाद एक retracement closure दिखेगी, right? उस रिट्रेसमेंट क्लोजर के बाद ही मैं देखूंगा, उससे पहले नहीं. वाई? बिकॉज अगर हल्का सा भी मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में भी चला गया या कंसोलिडेशन जोन में चला गया, द मार्केट विल टेंड टू टेक अ प्रीमियम डीके इन इयर्स. ओके, सो हियर आई विल वेट, नो हरी. ओके, अगर इन केस मार्केट कंटिन्यू होती है बैंक निफ्टी में, लेट्स अलोकेट द नंबर्स इन द सिनेरियो ऑफ 5 मिनट्स. Why I am saying not yet? Because 15 मिनट में बैंक निफ्टी देखोगे, the point of action is not yet been built in the range as we required, right? So उसके वजह से at the current scenario we will take the point of action of bank nifty will be swing high at 48,833, swing low will be at 48,300, retracement point as 48,550. जिनको भी हरी में ट्रेड करना है उनके लिए लेवल्स, राइट? एट द सिनेरियो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? 48,833.55 minus 48,300.45. What is the formulative number? The formulative number is 5331.1. Right? With this number, what is the next plan of action? My retracement is 48,550.50 minus 533.1 into 1.618. 47,687. I am not interested in this trade. Okay. So this is the only one thing that I always make sure. क्या वॉल्यूम वैसे जनरेट हुआ है जैसे इस पॉइंट ऑफ एक्शन में मेरे को चाहिए, राइट? उसके लिए फ्यूचर्स में आके चेक कर लेना, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स या निफ्टी फ्यूचर्स में क्या वॉल्यूम ऐसा बिल्ड हुआ है कि मार्केट डायरेक्टली 3,000 पॉइंट गिरेगा, सॉरी 1,500 पॉइंट, राइट? लेट्स चेक दैट आउट ऑल्सो.
What do you see? The markets was tangent at this point of range. पूरा tangent था market. Tangent होने के बाद एक volume allocate हुई on the opening, right? Opening में no doubt volume generate हुआ, but this was just the selling pressure. जो जो कल trade में थे उनका major allocation यहाँ पे हुई है. Sell off हुआ, volume increase हुई. But major volume if you are noticing किस तरफ का है? Buyers, right? So in this scenario, if you are looking for a trade towards the short, then it won't make a sense till the time it doesn't give you a closure. Then continuity. Okay? अगर मेरा वॉल्यूम अगर सस्टेन हो गया समझ लो, बैंक निफ्टी विल डू ओनली टू थिंग्स. It will hunt the first half entirely of all the retailers. Second thing, सबको ट्रैप करके हमारा डायरेक्शन में फिर से आ जाएगा मार्केट. टू थिंग्स, ओके. एंड एक चीज याद रख लेना, अगर बाय मिस्टेकली भी हमारा ऑपोजिट गया, राइट, देन द प्लान ऑफ एक्शन इज वेरी सिंपल. देयर शुड बी ए रिजेक्शन. विदाउट रिजेक्शन आई एम नॉट इंटरेस्टेड. जो भी करना है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लॉन्ग के तरफ करके बैठना. शॉर्ट के लिए जब तक यहाँ पे मेरे को 2-3 फॉलो थ्रूस नहीं मिलेंगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. सेम विद निफ्टी, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. ओके. जब तक मेरे को मेरा प्रीवियस डिमांड का क्लोजर नहीं देता है उसके नीचे, आई वोंट बी लुकिंग फॉर सेलिंग. ओके. होप एवरीवन आर क्लियर इन दिस पर्सपेक्टिव. And Nitin, hope you are also clear in this thing. Right? The execution of yours was in FOMO. Please don't repeat. You have still 4 options, means 4 times. If you repeat the same mistake for 4 times, then you're doing it purposefully. Okay? Yes, सब लोग लॉन्ग की तरफ मैथमेटिकल नंबर्स डाल के बैठना, शॉर्ट की तरफ नहीं. अगर शॉर्ट की तरफ देखना है, लेट द मार्केट क्रिएट ए प्राइस एक्शन, विद दैट प्राइस एक्शन ओनली, नॉट प्रायर टू दैट. At any scenario, not prior to that. Okay? All clear, guys, in Indian sessions? हाँ, एक चीज, 1500 पॉइंट्स मूव करना बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है. बट वो आज के दिन में मूव करने के लिए सही समय नहीं है. टुडे इज नॉट द डे फॉर दैट मोमेंट. उसके वजह से बोल रहा हूँ. एंड यहाँ पे जितने भी पैनिक में, रनिंग कैंडल्स में, फोमो में ट्रेड लिए ना, सबका ऐसा लेने आएगा मार्केट. समझ लेना. यहाँ पे जो जो रनिंग में बैठे हैं, हाँ, थोड़े लोग स्कैल्प करके क्लोज भी कर दे होंगे, राइट. ग्रीड में जो जो लोग बैठे हैं, अभी तक होल्ड कर रहे हैं, डेफिनेटली लेगा. ऐसे वन मोर थिंग, लेट द मार्केट गिव एन इंडिकेशन. नीचे के लिए देखना है, उससे पहले नहीं. मार्केट इंडिकेशन देगा तो इवन आई विल लुक फॉर ए ट्रेड, बट लेट द मार्केट गिव द इंडिकेशन फर्स्ट. कितने लोग बैंक सॉरी गोल्ड में हो, हर एक रिट्रेसमेंट पॉइंट के साथ कितने लोग बैठे हो, बता देना. Any doubts, please do ask. If you're learning from this team, hit a like, share, and subscribe. And all the old members,
Hit the like button, guys. Anyone selling USDT? Why even? What happened? Sir, on what basis did you say 70 pips only? Exactly, market is taking rejection from 70 pips. एक मोशन आएगा यार, क्योंकि मेजर लिक्विडिटी हंट हुआ ही नहीं है अभी तक. मेजर लिक्विडिटी हंट किए बिना मार्केट कैसे मूव करेगा? Let the market hunt first. एक चीज हमेशा याद रखना, इतना आसान तरीके से पैसा नहीं देता है मार्केट रिटेलर्स को, क्योंकि आज तक जितने भी knowledge which has come out, right, that is all opposite, right? Retailers are trained to know as if the market is going in the direction, right, and volume भी उसके साथ गिर रहा है, तो समझ लो मार्केट कंटिन्यू करेगा, राइट? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है एंड वॉल्यूम नीचे गिर रहा है, एक पॉइंट ऑफ एक्शन में जाके मार्केट रिवर्स हो जाएगा, राइट? दिस इज नॉट हाउ द मार्केट वर्क्स, गाइस. तो ये नॉलेज के बेसिस पे अगर आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हो तो डेफिनेटली हंट करेगा ना. हाँ, उस वॉल्यूम में एक चीज सही बताया, उस पॉइंट ऑफ एक्शन में, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है एंड वॉल्यूम स्टेबल है, तब डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा, बट एक पॉइंट ऑफ एक्शन में जाके गिर जाएगा, वो भी गलत है, आधा सही है आधा गलत, राइट? सो दिस इज द नॉलेज व्हाट पीपल आर ट्रेडिंग इन. Okay. 6,250 points running in BTC.
Anyone has any doubts, please do ask. Back test करो, कोई भी डाउट आता है पूछो. अगर ये रेंज ब्रेक होती है, then only next plan of action. उससे पहले नहीं. Okay. सर आप फंडामेंटल्स भी सिखाते हो क्या? सिखाएंगे ना?
क्या यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुई? नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट स्टैंजेंट था, राइट? जैसे ही मार्केट यहाँ पे स्टैंजेंट हुई, व्हाट डू यू नोटिस? एक स्पाइक ऑफ एक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हुए मार्केट टुक एन फ्लो। कहाँ पे लिया वो फ्लो? इन दिस करंट कैंडल, दिस वाज द स्पाइक रेंज। बट रिटेलर्स क्या सोच रहे? ओके, वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, मार्केट गिरता जा रहा है, यहाँ से कंटिन्यूटी करेगा। ओके, जैसे ही मार्केट गिरना शुरू किया, जैसे ही वॉल्यूम में स्पाइक आना शुरू किए, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट मार्केट इज डूइंग? मार्केट हंटेड एवरीवन, टुक द लिक्विडिटी। कल के दिन में एक यहाँ पे प्रेशर आया था सेलर्स का, एंड वी वांटेड अ रेड कैंडल एंड अ कंटिन्यूटी। वी गॉट द रेड कैंडल एंड कंटिन्यूटी। पोस्ट दैट व्हाट डिड मार्केट डू? मार्केट कंटिन्यूड द रैली, करेक्ट? जैसे ही मार्केट ने रैली कंटिन्यू किया, वेयर वाज द नेक्स्ट स्पाइक ऑफ एक्शन? द नेक्स्ट स्पाइक ऑफ एक्शन वाज एट दिस पॉइंट ऑफ एक्शन, राइट? सो अगर इस कैंडल को हम अलोकेट करके देखेंगे, डू वी हैव द विक क्रिएशन टुवर्ड्स द शॉर्ट? डू वी? यस, यहाँ पे सेलर्स पोजीशन एक्टिवेट हुआ, राइट? मार्केट वेंट अप, अगेन अ सेलर्स पोजीशन वाज एक्टिवेटेड. व्हाई द मार्केट वाज कंटिन्यूइंग इन दिस रेंज? बिकॉज मेजर लिक्विडिटी ग्रैब चाहिए था, एंड वो मेजर लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ पे थी? द मेजर लिक्विडिटी ग्रैब वाज एट 2930 एज पर द मैथमेटिकल नंबर, करेक्ट? सो जैसे ही 2930 हिट हुआ, व्हाट डिड मार्केट डू? मार्केट टेंड टू ब्रेक। जब विक क्रिएशन था, उधर से ही ब्रेक होना शुरू हो गया था। बट पॉइंट ऑफ एक्शन बिल्ड कब हुई? जब वो लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ एक्शन में जाके क्रिएशन बिल्ड हुई। एंड यहाँ पे क्या इंड्यूसमेंट क्रिएट किया हमें? नहीं, इंड्यूसमेंट नहीं क्रिएट किया. What is the second plan of action? If the market is not building an inducement and moving, market will tend to move in a direction with an insider candle, right? So इस point of action में आके market generated a movement. With the movement, what did it do? Definitely it took the rejection, continued. On the third candle was our entry. But इस point of action में अगर notice कर रहे हो, हर एक कैंडल में buyers pressure थी. मार्केट नीचे आया, राइट? इस कैंडल में क्लोजर थी, बट पोस्ट दैट हर एक कैंडल में बायर्स प्रेशर थी, राइट? एंड यहाँ पे जो विक क्रिएट हुआ था, इफ यू आर नोटिसिंग इन दिस कैंडल में विक जो क्रिएट हुआ था, क्या यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था? लेट्स ड्रॉप इट. ओके, डू वी सी a volume increase in that current scenario? No, right? So at this point of action, what did market tend to do? Market followed the movement of the direction, right? डायरेक्शन लिया, कंटिन्यूटी इस पॉइंट ऑफ एक्शन से फिर से मार्केट ने कंटिन्यू किया, राइट? मार्केट इज गोइंग स्टडीली. डू वी हैव ए प्रेशर ओवर हियर? यहां तक भी बायर्स पोजीशन ही थी. अचानक से एक ड्रॉप क्यों आता है मार्केट में? बिकॉज इतना आसान तरीके से हमेशा समझना पैसा नहीं देता है मार्केट. एंड इन दिस मूवमेंट, छोटा छोटा जो कैंडल्स बना था, डज इट लुक लाइक a movement of a volume, or does it look like a retailer's movement at this point of action, right? A retailer's movement in this point of action, right? So यहाँ पे क्या की market came down to the range. In this range, what did market do? In this range, what did market do? Market tend to close an action pot. With the action pot, the market took a reversal, right? यहाँ पे मार्केट क्या कर रही थी? मार्केट लिक्विडिटी हैंड कर रही थी, लिक्विडिटी नहीं मिल रहा था, तो इट जनरेटेड ए लिक्विडिटी ओवर हियर. व्हाई? ऑल द रिटेलर्स नो दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? इस पॉइंट ऑफ एक्शन में लॉन्ग करना चाहिए. बट जैसे ही मार्केट ऊपर गया, पार्टनर वन, पार्टनर टू, सॉरी, पार्टनर वन, पार्टनर टू, पार्टनर थ्री क्रिएट करके कितना मूवमेंट आया यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ एक्शन में? जितना मूवमेंट ऑफ अलोकेशन फॉलो क्या किया? द इंड्यूसमेंट वन, ब्रेक, सस्टेन, कंटिन्यू, राइट? फॉलो करते हुए अभी मार्केट आ रही है. क्या हमारा इस पॉइंट ऑफ एक्शन में सिर्फ इंड्यूसमेंट का लिक्विडिटी अलोकेट होगा? नहीं, द एंटायर फर्स्ट डिमांड, राइट, दैट विल बी एडेड ओवर हियर.
If the market sustains, the next point of action is we will be adding the second demand. 50% will be our first range of target. And at this scenario, market नीचे definitely आ रहा है. क्या वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है? नहीं, वॉल्यूम इज टैंजेंट. डिक्रीजिंग डेफिनेटली है. डिक्रीजिंग कहां तक होगी? जहां तक वो पॉइंट ऑफ एक्शन ना पकड़े. एंड उसका पॉइंट ऑफ एक्शन कहां पे है? उसका पॉइंट ऑफ एक्शन आके है 29.15, 29.10. ओके, तब तक मार्केट एक कंटिन्यूटी में मूवमेंट लेके आएगी. यार ये वर्षा, ये डिलीट बटन से ना म्यूट का हटाओ यार. ओके सर, प्लीज फिक्स ऑडियो. कांट हियर. यस, सिर्फ वो सेटिंग्स में बटन चेंज करना है. वो बटन चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा. क्लियर गाइस? माय बैड यार. सॉरी सॉरी. 110 pips running. ठीक है. Yes, that problem is also fixed. Great. क्यों, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए. ये म्यूट में भी नहीं जाएगा अभी. Learning guys. Never did YouTube before. So any doubts, Nilesh? Good morning, Rakesh. You don't have to apologize. When there is a mistake,
You won't become smaller or bigger by apologizing. So that's totally fine. Hit the like button, all the new members. If you're liking the stream, if you're learning from the stream, do hit a like, share, and subscribe. लंदन सेशन का कैंडल आ रहा है. Sir, I have back tested from 26th high. I have updated some notes. Can I share here only in gold? Yeah, you can share here, or if you want to share in Telegram, you can do that. Up to you. Sir, took a trade towards long. लंदन का फर्स्ट कैंडल में ही लेना था. नेक्स्ट कैंडल में ले लेते, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल में एक छोटा सा रिजेक्शन भी आएगा. If a big swing is created and after the price stays inside the big swing, creating small wings keep price sideways, then in this case, how the pro players hunt for liquidity. जैसे अभी just now I had explained you, right, Nilesh? What is the market doing over here? The same thing, right? Is it following the same spectrum as of now? Thank you for the explanation of the volume, and the live proof as well loved it. You're welcome.
It's turning around in the live, right, Nilesh? रिटेलर्स का सोच जहाँ पे खत्म होती है वहां पे इंस्टीट्यूशंस एंड हेज फंड्स का शुरू होती है. Okay. So if you want, I'll explain this drawing as well, right? So we had drawn the market will go up, right? At a point of range, market will create an inducement. अगर इस point of action में wick generate होता है, definitely market will come down till the point of action of previous demand. In the scenario, this was our demand one. Demand one complete हुआ. Demand two mini reversal area से rejection लेके. What is market trying to do? Market is trying to go back in the same direction. अगर इस point of action में notice कर रहे हो, what is the thing that you're noticing? Do we have a spike? No, we don't have a spike. It's just following the liquidity and it's just going in the direction. Okay. सेम थिंग. एंड इस पॉइंट ऑफ एक्शन में जो एक्सप्लेनेशन दिया था, मार्केट जब ऊपर जाता है, राइट, ऊपर जाके एक इंड्यूसमेंट रेंज क्रिएट होती है. अगर यहाँ पे विक जनरेट नहीं होती है तो मार्केट विल ओनली ड्रॉप एज पर द इंड्यूसमेंट 3. ओके. सो इन दिस सिनेरियो दिस वाज अ रिवर्सल. डेड ऑपोजिट को कर लो ये दोनों सिनेरियो में. यहाँ पे अगर नोटिस कर रहे हो, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में विक थी, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में विक्स नहीं था, राइट. गॉट इट. सो ये सब कोई नहीं बताएंगे आप लोगों को, राइट. यूटिलाइज इट, यूज इट इन अ सेम वे. अगर ये वॉल्यूम अंडरस्टैंडिंग आ गई आप लोगों को, राइट, सो यू गाइस विल नेवर टेंड टू सिट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन.
Actually, I still think like a retailer that generally the retailers tends to put their SL below the swing, and for me, the best way for pro players to grab the liquidity is the break the intermediate swing, low grabs the liquidity and goes typically retailer's mentality. I was not paying attention to the wick and volume in accordance. Yes. Sir, I entered in long. Good morning, Dinesh. 1 और मिनट है. Good learnings on volume. Thanks a lot. No worries. Keep learning, keep growing. 39 seconds. BTC beautifully going. Good price action. Keep it up.
Incoming mail. In case of external liquidity, we look for a rejection from the red candle and the rejection candle after that. But if it doesn't get rejection from the low and it directly moves up, then it is sustainable move. Even if the volumes are induced as rejection, typically grabs more volume. Yep. Sharing the backtesting results, bit lengthy, so sharing in Telegram. I've been backtesting and I am highlighting some major areas I'm trying to make perfection with gold. Testing range from 26th Feb till date. Concept use MC1 and inducement. I used the market high of 29.56 and the MC1 calculated 0.618 target to 28.98. I used the high because there was an inducement after the form and the market fell from there. 0.5 and 0.35 did not show much support in this fall to be used as target. However, 0.618 zone showed, showed good support in the fall and the market reversed achieving the target. Point B. The support was followed by market moving up from 2889.43 and then followed by an inducement. I was expecting market could move higher at its inducement as the market 28.99 has reached. However, market fell after the inducement in 1 hour. So now I mark the new target using the high before the inducement 29.30 to drive the new targets 28.63. 0.618 MC1, the market achieved the target and now bridged that level and then gave a small pullback. After that, inducement fell again. So, means seeking for a new high before the new inducement was made. The new high before the inducement was 2898.5, paving way of the targets to be 2832. This area has aligned the major demands. Second clone 50%. The clone is nothing but the demand cloning, right? And the target was achieved. Missing the target by 1 pip, that market reversed from 2832.73. Now I wait for an inducement to be formed. Missing the target by 1 pip was expecting the market to come down after the inducement and reverse from the exact target. However, the market opened the next week with a gap up and after inducement, three markets moved up. So now using the new low before the inducement calculated the new 0.618 zone to be 2878.49. Based on the new low, the revised target is 2945.18. The market should move there on 6th March on 7th March to work on whether I am on the right path. Still not able to understand supply and demand drawing, which I do, connecting the dots, getting confused with revived supply and demand. Also not able to understand circulative volume spectrums on retailers allocation, not able to allocate volume and figure out after the inducement whether to be in a buy or a sell, right? Definitely we will work on the buy and sell, right? The volume allocations, I'll definitely drop a video, right? Confusion aata hai. I have asked you 22 days, please give me that 22 days, right? Allocation wise, you have done it right. एक चीज याद रखना, if it's near the target, right? Just for an example, this is the target. If there is a 1 pip gap range, that's totally fine, right?
because some players tweak the numbers in the mathematical calculations by 0. 0.6, 0. 0.7, 0. 0.1, 0.2, right? So this is totally fine for us. या थोड़ा ऊपर से जाएगा या थोड़ा नीचे से जाएगा. That is totally okay. Okay, Mahavich? The most thing is understanding the thing. Okay? Good learnings, good note downs, good points that you have measured out. Great work. Okay, sir. Thanks a lot. Right? हल्का सा ऊपर नीचे, like if it's a gap range of 10 pips, that's totally fine. Okay. Yeah, I do understand that you're not getting the point, right? Give me that 22 days, you will definitely get that points. Thanks for telling me I am on a right track. Lovely, guys. Keep it up. Next target is directly at here. जो आप लोगों ने मार्क किया है 93, sorry, where is that target? 93,582. $93,582. Yo. Okay. I'm clearing unwanted drawings. Hope this doesn't bother you guys. Thank you, Dinesh, for doing the needful for the first time. Draw the supply and demand. गलत है. फिर से ड्रॉ करो. 1 आवर का ड्रॉ करो, अभी के लिए काफी है. जितना प्रीवियस सप्लाई है, प्रीवियस सप्लाई को अलोकेट करो. Yes. Mark that. Guys, 2 मिनट के लिए म्यूट में डाल रहा हूँ.
Sorry guys, sorry. Good morning, Venkatraman. What is it now? Anyone has any doubts, please do ask. Whoever are new to the stream, do like, share, and subscribe if you're liking and if you're learning from it. By 29, 16.518. Great 40 pips running. Keep it up, man. राइट इसके ऊपर क्लोजर होने के बाद सिस्टम ट्रेलिंग कंटिन्यूटी. यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख लो दिनेश, एमटीएसएल फॉलो करने के लिए. अभी नहीं फॉलो करना है, जैसे ही 40 पिप्स का कवरेंस मिलेगा तब से एमटीएसएल फॉलो होगा, ठीक है. ओके, थैंक यू, यू वेलकम. 16 seconds more, guys. प्रीवियस सप्लाई भी ड्रॉ कर लो दिनेश. वही वही 15 मिनट का ही प्रीवियस सप्लाई जो दिख रहा है ना वो ड्रॉ करो. 6 बजे के कैंडल से, नहीं 6 बजे के कैंडल से. एक सेकेंड गाइस, म्यूट कर रहा हूँ. 'Sorry guys. Everyone start the MTSL now. $50 pips running, TSL 10 pips, MTSL 20 pips. Right. In system 10 pips, MTSL 25 pips.
जानबूझ के किया तूने वो? Beautiful Smita ma'am, beautiful Varun, beautiful Agastya. Keep it up. भाई डर को डालो पॉकेट में, ट्रेड फियरलेसली। सही डायरेक्शंस में बैठते हो, उसके बाद बोलते हो डर गया। वो रिटेलर्स माइंडसेट से बाहर निकलो आप लोग। थोड़ा सा प्रॉफिट नहीं देखते हो, एग्जिट कर देते हो। टाइम लगता है, पता है, 1 साल नहीं। So Nilesh, did you understand how did the volumes acted in perspective of the movements, right? Don't worry, you guys will get a video on this as well. Yes, sir, certainly. Sir, we cannot thank you enough for giving unvaluable insight. Okay, giving us valuable insights on market. I have never seen market in such a way. You have literally changed my perspective of looking at the markets. Previously, I was thinking and doing the typical predictive analysis, which wasn't helping. Thank you so much. आप लोग सीख रहे हो, आप लोग बढ़ रहे हो, आप लोग बने रहे हो. That's the biggest thing that I could love to see. Please learn, keep learning, and keep growing. Good morning, Yogesh. How are you? Long time. What is the full form of BRB, guys? Okay, be right back. Okay, got it.
आई एम गुड थैंक्स सर. डर खत्म हो रहा है. गुड टू हियर दैट वेंकटरमण. Was busy with work. No worries योगेश. अच्छी बात है, डर खत्म हो रहा है. Thank you so much for the support and hope you guys are enjoying the learnings as well as the earnings. Sir, I took two trades and hit CTCSL in BTC towards upside. कैसे हिट हुआ यार? सब लोग लॉन्ग की तरफ ही तो है. कहाँ पे एंट्री लिए थे? Where did you enter? सर एक चीज बताओ, ऐसे लेवल्स कैसे डालते हो आप? किस चीज में? इंडियन सेशंस. सर नितिन का तो पैसा गया इधर. That's totally fine, yeah. One mistake done. Don't repeat it. This is for everyone. Same mistakes, don't repeat it for 4 times, guys. अगर 4 बार के ऊपर कर रहे हो, please take a break for 1 week. घूमो फिरो, ऐश करो. 90 to 400. 90 to 400. That was a FOMO entry of yours. First one is a FOMO entry. Second one, 91 500. 91 500 is a perfect entry, right? But execution of giving SL was wrong. Okay, एक perfect entry थी, एक गलत entry थी. Make sure that you don't repeat the FOMO entry. Okay, and यहाँ पे तुमने entry लिया था, that was Asian session. Your point of contact should be of 2 points, which is 200 points. 200 points SL रखते तो अभी आपका ट्रेड चल रहा होता 1000 points plus पे, right? Then once it crosses 200 points and sustains, which was at this range, that's when you have shifted your TSL, no? Make sure you don't repeat this again, Yogesh. Okay? जब तक 200 पॉइंट्स का एसएल है, 200 पॉइंट्स ऊपर जाके सस्टेन होके 300 400 पॉइंट्स बनने दो, तब जाके टीएसएल लगाओ. सॉरी सॉरी, ये नहीं है एट ए करेंट कैलकुलेशन. वो शॉर्ट ट्रेड का था. सर एग्जैक्टली 70 पिप्स से मूवमेंट दिया नीचे की तरफ. थैंक यू. Yes sir, silly mistake. Now looking for a new entry, waiting patiently. Great. Hit the like button, guys. Whoever are new to the channel, welcome to the channel and the family.
कोई भी डाउट है पूछ सकते हो. If you're learning from the stream, if you're liking it, do hit a like, share and subscribe. Suppose there is a liquidity zone at the bottom of the swing which acts as a support. If the price breaks the liquidity zone as per the concept, the zone flips and later it should act as resistance. Can you please explain the concept as per the retailers or pro order placements? What changes the psychology in pro and retailers? समझो. Right, definitely I respect support and resistance. Okay, but support and resistance काम कहाँ करता है? So you have drawn a support, you have drawn a resistance. Okay, in this zone market played an action. Okay, market played 1, 2, 3, 4, 5. Definitely it took a rejection perspective, came down, right, took the support, went up, right. In this scenario, say me one thing, it gave a break at this current stage, right. When you got a break at the current stage, what will be the one thing that you will be looking here? As a retailers, they look for two perspectives. One is support converted into resistance, directly enter. Okay, definitely it works 70% of the time, right. That accuracy for a retailer is a really good one. But in scenario of this, if market perspective, what does the most of the retailers do? 85% of the retailers on the support and resistance. Market took a break, they entered here itself, right. Market will never sit in a position and then continue at the same place. Always remember, whenever there is a break, right, break आने के बाद एक build करती है. What is that build? Hunt of the first liquidity in that range, right. Then the movement get allocated. इस point of action में movement allocate होता है. इस allocation के साथ movement जाती है फिर से, right. Retailers यहाँ पे जीतते क्यों है? क्योंकि उनका SL कहाँ पे है? Resistance पे है. But is that worth risk taking of that big? No. Why? Because your winning probability over here is 50-50, not 80-20, right. So always remember, whenever there is a support, resistance, and if you're following that, market will give a break, play a small role, come down, create an inducement over here, right. In this perspective, what will the market do? Market at this point, it will create an accumulation, right. So what is accumulation, what is manipulation, and what is distribution? When the market is in the accumulation zone, right, first it will allocate a manipulation structure of a break, right. Then it comes down to the accumulation area. With this accumulation area, it continues the distribution. With this accumulation area, market continues the distribution. So 85% of the retailers go wrong over here only and take the entry in two perspectives. One, enter, continue. This is a very wrong thing. No doubt, okay? When your winning probability is of 70%, why 70%? They will not hold. एक candle close हो गया, done, exit.
So you have to follow accumulation, manipulation, and distribution structure in the following of the support and resistance game. Always remember that. And accumulation and distribution follows only at support and resistance, where the market tends to build a sideways zone. In that sideways zone, a manipulation with a manipulation continuation to the accumulation area and then distribution. If it's in different sessions, right? समझो अभी एशियन सेशन में ये accumulate हुई है, right? लंदन सेशन में क्या करेगा? एक मैनिपुलेशन क्रिएट करेगा, राइट? मैनिपुलेशन क्रिएट करने के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन अलोकेट यहाँ पे करेगी जो कि रिवर्सल होगा, राइट? इस पॉइंट ऑफ एक्शन में क्या कर रहे हैं? What does the market retailers are doing? Okay, their resistance is here, the support is built. अगर मार्केट कंटिन्यू करेगा डायरेक्टली यहाँ से नहीं लेगा, अंदर जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को टच करेगा, उस पॉइंट ऑफ एक्शन से कंटिन्यूटी आएगी, right? That is the distribution. And in the other scenario, if it's New York, मार्केट एशियन सेशन में क्लोजर दिया है, क्लोजर देने के बाद लंदन सेशन में मैनिपुलेट हुई है, वंडरफुल, राइट? उसके बाद लंदन सेशन में ही आपको एक रिवर्सल पॉइंट ऑफ एक्शन जनरेट होते हुए दिखेगी. डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ एक्शन में अगर नोटिस करोगे, सपोर्ट कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस लेके, राइट, जो नियरेस्ट लिक्विडिटी पॉइंट है इंड्यूसमेंट का, उस पॉइंट ऑफ एक्शन से रिवर्सल के साथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंशन होगा इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे. Okay, this expansion will take a play. So when this is being looked, only when you are looking as a trade allocator in a sessions. Example देखना है, I'll show you the examples. Right? If I draw this as one of the sideways zones, okay? Sideways zone draw किया, market ने क्या किया? Definitely played in a zone area. Break, distribute हुई, market came up, right? जैसे ही market इधर ऊपर आया, what did the price action look like? कल के दिन it showed people the confidence to take a trade towards the short. क्यों? अगर नोटिस कर रहे हो नेक्स्ट कैंडल में विक भी आई है, right? Retailers took an entry over here on this break, on this break of action, on this break of action over here in the running. बट मार्केट ने क्या डायरेक्टली मूवमेंट किया? नहीं, मार्केट वेंट टू टेक द लिक्विडिटी, right? When market went to take the liquidity, everyone's SL was had this in this place, right? Same example, let's draw with a similar direction move. Let me remove this. So this was an accumulation, manipulation, distribution with an expansion. Let's take this range as my resistance, okay? Okay, this is as my resistance range, this as my support range. This one as my resistance range, okay, this one as a support range. What did market follow over here? Definitely market was in support and resistance, resistance break, conversion. What did the conversion look like? Took a support, continued. जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ, डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ एक्शन में सब लोग बैठे हैं. What did market tend to do? Market again showed a confidence over here. विक देख रहे हो? विक देखने के बाद सेलर्स डेफिनेटली सोचेंगे दिस इज अ शॉर्ट एक्शन, राइट? विद दिस शॉर्ट प्राइस एक्शन, मार्केट में फिर से लोग बैठे डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ एक्शन. व्हाट डिड द मार्केट डू? मार्केट डायरेक्टली वेंट अप टू द रेजिस्टेंस पॉइंट,
From the resistance point, market started to fall, right? Two action plans. So which are the two action plans that we just now what we saw? Let's come down over here. So did you notice the first rejection what we saw was of this one? Second one was this one. All right, wherein market took a inducement range break, sorry, support and resistance break, support trap किया, resistance के तक जाके continue in the market. What is the one thing that it works 70% of the time that we will look, we have to hunt for that. Let's hunt it. Okay, directly मेरे को दिख नहीं रहा है. I have to literally hunt for it. Yes, let's take an option. Right, इस सिनेरियो में भी ऊपर के लिए ब्रेक किया, right? Break one, what did the market do? Continued drop, trapped, right? In the scenario of others, what is the next thing you can look at? Okay, there was one small range at this point. इस point of range में एक allocation दी उतना ही, right? So इसी point of action में फिर से हम support and resistance draw करते हैं. Okay, this will be my resistance. Okay, this will be my support. In this scenario, what did the market do? Market was playing in a zone break, right? Accumulation break हुई यहाँ पे. जैसे ही accumulation break हुआ, retailers definitely took an action. जो भी wait कर रहे हैं वो यहाँ तक आया. जैसे ही वो देखे okay rejection लिया है, entered. But what did market do? Market went till the resistance level. With that resistance level, market tend to take a rejection, right? उसी point of action से fall continue हुई थी. Right? If you're a trader through a support and resistance, always remember one thing. It's not a direct plan of action of breakout or breakdown. It's a plan of action of where does the market will come till the retracement point and continue. Hope support and resistance के हिसाब से how does we look for a trade and how does retailers look for a trade perspective change हुई हो. Nilesh, hope you got the point. Varsha, black coffee. Absolutely clear, sir. सर ये सब दिमाग में स्टोर्ड कैसा है ड्राइंग्स के वजह से. Hit the like button, guys. If you're new to the stream, welcome to the stream. If you're learning from the stream, do like, share, and subscribe. Hope there is no lag, guys. No. Zoom वालों को नहीं पूछा, YouTube वालों को पूछा.
Do the back testing, do the forward testing. With that, execute the trades at the level so that you guys don't lose on making profits. बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको समझ में आएगी. जो मेजर चीज जब समझ में आएगी कब पता है, जब आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे रिप्ले ऑन करके एक पॉइंट ऑफ एक्शन से. ऑडियो वीडियो क्रिस्टल क्लियर, ग्रेट. राइट, एक पॉइंट ऑफ एक्शन से जब फॉरवर्ड टेस्टिंग शुरू करते हो ना, उसमें आपको पता चलेगा ओके मार्केट क्या हुआ इस पॉइंट ऑफ एक्शन में. राइट, आप लोग बैक टेस्टिंग करते हो, बैक टेस्टिंग में आपको क्या है, आपको आसान हो जाएगा. करेक्ट, एक सिनेरियो में आओगे, एक चार्ट देख रहे हो, हाँ ओके यहाँ पे रिट्रेसमेंट है तो मैं कौन सा हंट करूँ, ओके ये होगा, ये इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ. राइट, in this you will not learn, in this you will understand what the concept is. But when you do the forward testing, right, that's when you will understand, okay, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो मैं यहाँ पे ट्रैप होता, मेरा एसएल जाता. राइट, हाउ कैन आई मिनिमाइज दैट एसएल पॉइंट ऑफ एक्शन. राइट, that and all you will understand it forward testing. Sir, where do you do the forward testing? In IG. इसमें खाबा का मेरे को 30,000 देना पड़ेगा, नॉट वर्थ. Just to remove an ad, I don't want to pay 30,000. Excuse me. हाँ, आप धन यूज करते हो ना, धन में भी रिप्ले बटन है, उसमें भी यूज कर लो. बट उसमें आप इंडियन सेशंस कर सकते हो, गोल्ड बीटीसी सब नहीं कर सकते, उसके लिए यूज गो चार्ट. Yes, you are right, and forward testing is providing more understanding. Yes, right, that's when you will learn. You will understand, okay ये ड्रॉप क्यों आ गया. वो सब समझ में कब आता है, जब आप फॉरवर्ड टेस्ट करते हो मार्केट्स में. ये कोई महेश करके स्ट्रीम देख रहा है, उसने मैसेज किया है, सब गलत गलत सिखा रहे हो, पहले तुम सीखो उसके बाद सिखाओ. ओके महेश जी, आप बड़े हम छोटे, गलती हो गई तो माफ कर देना. 10 साल से ट्रेड कर रहा हो, ऐसे कोई भी आज तक नहीं बताया है, तुम गलत सिखा रहे हो. दूसरे लोग सब सही सिखाते थे, मैं यहाँ पे आके टाइम वेस्ट कर दिया. मैंने कब बोला यहाँ पे आके टाइम वेस्ट करो. ये क्या है स्पेलिंग. CHUTIYAPM, CHUTIYAPM. चूतिया. ओके, ये सब चूतियापा है, पहले तुम सीखो उसके बाद सिखाओ. ट्रेड करके दिखाओ, तब मैं मानता हूँ कि तुम ट्रेडर हो. ओके, वो उसका मीनिंग नहीं पता है मेरे को. एनीवेज, वॉट एवर यू हैव सेड, आई डोंट हैव टू प्रूव यू जनाब.
Mr. Mahesh. And I am not saying you that you have to be in my stream, you have to learn the concept, you have to do anything. Right? आप जहाँ पे सीख रहे थे वहाँ पे सीखो. Accumulation, manipulation, distribution, it seems. छोड़ो यार. आ, वर्षा कितना दिन लगेगा यार ये बॉट आने में? 3 दिन और. नाइस जॉब. यार उनको एक्सपेडिट करने बोलो यार. Get me in touch of them, no? भाई साहब, पूरा दुनिया भर के लोग बैंक निफ्टी निफ्टी में शॉर्ट है, तुम बोल रहे हो लॉन्ग की तरफ देखो. गलत क्यों सिखाते? ओके. पूरा दुनिया सही है, नितेश इज रॉन्ग. ओके. आई लाइक इट. ऐसे क्या हो गया इंडियन सेशन में? लवली यार. हाँ. सर आपको गुस्सा नहीं आता है? मैं गुस्सा करके करूँ क्या यार? फर्स्ट चीज बताओ. मेरा दिमाग खराब होगा. राइट, मेरा दिमाग खराब होगा तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑन द मार्केट हल्का सा ऊपर नीचे होगी. राइट, एंड पीपल आर ट्रेडिंग ओवर हियर. एक गलत एंट्री दे दिया, सो वॉट एवर दे हैव मेड दे विल क्लोज अप बाय 40% लॉस ऑन इट. 40 पिप्स. सो कोई एक एरा गेरा आके मेरे को कुछ बोल गया करके मैं उसको दिमाग में लेके चलूंगा, देन इट्स ए लॉस फॉर मी, इट्स नॉट ए लॉस फॉर हिम. लोगों का काम है कहना, कहते रहने दो. मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ. यहाँ पे जो सीख रहे हैं उनको पता है क्या कर रहे हैं. डन एंड डस्टेड. एक चीज हमेशा याद रखना, झुंड में चलने वाले हमेशा सही नहीं होते हैं जनाब. झुंड में बकरियां भी चलते हैं. You're lucky, Mahesh. Sir, don't take all these things personally. You're lucky, Mahesh. Sir doesn't take all these things personally. Yes. बेचारे का लॉस चल रहा होगा, उसके वजह से वो गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहा है. निकालने दो यार. नो प्रॉब्लम एट ऑल. एटलीस्ट उसका स्ट्रेस बस्ट होके एटलीस्ट थोड़ा माइंड काम हुआ ना. आई एम हैप्पी फॉर दैट. वैसे वो चूतियापा मतलब क्या है? कोई समझा सकते हो क्या? ओके, लेट मी चेक. गूगल करता हूँ व्हाट इज चूतिया. ए यस आई एम. इफ यू आर थिंकिंग दैट आई एम चूतियापा, यस आई एम चूतियापा. मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ, गूगल में क्या बता रहा है उसका मीनिंग. राइट, अ पर्सन हु डजंट नो एनीथिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट. सो यस, आई एम डूइंग दैट एज पर यू महेश.
ये हिंदी में लिखा है, प्लीज कोई ट्रांसलेट कर दो यार। वेंकट रमन, आपने हिंदी में जो लिखा है उसको ट्रांसलेट करने के लिए मेरे को अभी गूगल यूज करना पड़ेगा। प्लीज कैन यू ट्रांसलेट समवन टू मी, व्हाट इज दिस? ओके, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। हाँ, गॉट इट। वो फर्स्ट वर्ड समझ में नहीं आ रहा था, झुंड। ओके। उसके लिए पूछा। नहीं, पिक से अच्छा तो साउंड गोट करता है रे। बकरियां चलते हैं झुंड में, शेर नहीं। अगर शेर भी उस झुंड में चलने लग गया तो बकरी और उस शेर में फर्क ही नहीं। ये मेरे को हटाना पड़ेगा क्या? ये जो नीचे सब्सक्राइबर्स का जो टैगलाइन है ना, उसे हटाना पड़ेगा मेरे को। कोई नहीं, थोड़े लोगों का तो काम आ रहा है। आने रहने दो। Anyone has any doubts, please do ask. Not yet. वेट करो, नॉट येट। अगर इस पॉइंट ऑफ एक्शन में आके मिलता है तो एक छोटा सा ट्रेड ऑफ एक्शन देख सकते हैं। सर, बॉट जो मैसेज डिलीट करता है, आप देख सकते हो क्या? हाँ, देख सकते हो। मेरे बॉट को हिंदी समझ में नहीं आती है, उसके लिए डिलीट कर दिया। ओके। अगर इस पॉइंट ऑफ एक्शन में योगेश एक ड्रॉप मिलती है, क्रिएशन क्रिएट होती है, देन कंटिन्यूटी। ये रिवर्सल में मानूंगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल क्रिएट हुआ है, एक्सटर्नल नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी हंट करने आ रही है मार्केट। ओके। तो वो लिक्विडिटी हंट होने दो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं। बट अगर इस पॉइंट ऑफ एक्शन में मिलता है, वेल एंड गुड, विथ एन इंड्यूसमेंट, नॉट डायरेक्टली। ओके, hit the like button guys। लाइव में ट्रेड लेके दिखाओ, तब मानूंगा। भाई, जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो तुम्हारे आके देखने में वो सोच से बाहर है। ठीक है, तो रहने दे। In case of failed inducement zones breakout, what should be
the entry point on the opposite side candles. Candle close in opposite sides or candle close and then rejection from the inducement zone. No, in this scenario, what did you notice? कहाँ पे था? कल के दिन की ट्रेड थी ना वो? Yes. In this point, always follow inducement 3. What will you see? Partner 1, partner 2, partner 3 break. Okay? Definitely sustained. No doubt. यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट पॉइंट नहीं मिला, फर्स्ट थिंग, राइट, फॉर ए कंटिन्यूटी. सेकंड थिंग, रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में नहीं की. क्या किया मार्केट ने? उसी पॉइंट ऑफ एक्शन से मार्केट ने एक ड्रॉप लिया, राइट. जैसे ही ड्रॉप लिया, एनीवेयर यू कैन लुक फॉर एन एंट्री. ओके, with that entry point, yes, definitely you can continue on the trade. Okay, and the entry कहाँ पे होगा? एक रेड कैंडल के साथ. ओके, एक रेड कैंडल क्लोज होने दो, देन कंटिन्यूटी में जो आता है उसमें देख सकते हो, एंड यू कैन लुक फॉर एन एग्जीक्यूशन. You don't have to sit here only. You can wait for one candle closure. Post that, you can look for an end. I set the TSL at 10 pips. Yeah, great. Okay, got it. How much retracement come in 15 minutes? गोल्ड में इंड्यूसमेंट में जितना रिट्रेसमेंट है उतना आना चाहिए. Okay, this is the first retracement what you can look for.
सर शांत क्यों हो गए? Hearing to the birds humming. सर शॉर्ट के तरफ नहीं देख रहे हो क्या? शॉर्ट के तरफ मैं तभी देखूंगा जहां पे वॉल्यूम स्पाइक आएगा या प्रॉपर इंड्यूसमेंट ब्रेक होगा, उससे पहले नहीं. And don't get confused between POIs, sideways, and inducement, guys. This is for everyone. Don't get confused. All the new members, welcome to the stream. If you're learning, if you're liking, if you're getting educated through it, do it a like, share, and subscribe. सर वो कहाँ गया? वो मैसेज कर रहा है, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा उतना ही. सिक्कों को अगर आप नीचे गिराओगे तो सिक्कों को अगर आप नीचे गिराओगे तो हलचल मचाएगी. कोई नोट गिरता है तो शांत गिरती है. भाई कहाँ से लाते हो आप लोग ये सब? ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳ್ಕೋದಿಲ್ಲ. Okay, okay, ma'am. Understood. ब्रेक सस्टेन होता है तो कंटिन्यूटी में जाएगा 29-27 तक. एक छोटा सा रिजेक्शन फिर से ले सकता है 29-25.820 से. सूफियाना जोगी, सूफियान जोगी. खतरनाक था ये डायलॉग. सिक्को वाला. ओके. हाँ सूफियान कुछ भेजे थे. किसका ये? अरुंधति मैम का. सूफियान कुछ मैसेज किए थे. व्हाट वाज इट? इफ आई कैन हेल्प यू आउट. Sir, can we also join in the Zoom session? No, you are not allowed. Superb, ma'am. इतना बड़ा एलटीडी का स्क्रीन है, उसमें चैट है. उधर चैट करो बोले तो तुम यूट्यूब में आके चैट कर रहे हो.
Sorry, sir, my name is also Mahesh. It's not me sending those messages. Mavich, I do know that it's not you because I do know that your short name over here is Magi, right? In the bracket, you have mentioned it as Mahesh, right? So don't worry. I know that. यूट्यूब में मजा आता है. तू भी वरुण के जैसे मत बन जाना, ठीक है? वरुण को भी पूछ लो. No fear when I enter in the right direction with the right candle, right? That's a good going, Venkatraman, right? You're going good. Just one thing you just have to keep in mind is that 22 days, if you follow the same footsteps what you're currently following now, the 23rd day you will have the confidence to hold, right? Like how you're doing, first day you were not able to hold, second, third, fourth, fifth day you are holding. Like that, you will get that patience even more higher to hold the trades till the targets. Yo, bro, how many trades taken? One so far. सर ETH USD का चार्ट दिखाओ. दिखाओ. Same footsteps as BTC. मैथमेटिकल नंबर डालो, 1 आवर पे आओ, राइट? 1 आवर में जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन दिखता है, स्विंग लो, स्विंग हाई, retracement point, right? Your target will be somewhere 2510 or 250, 2560. इस रेंज में आता है.
कब तक होल्ड करोगे टारगेट? एक छोटा सा रिट्रेसमेंट रेंज है, ये रिट्रेसमेंट कंप्लीशन पे सेकेंड राउंड ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, गॉट इट। अगर यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट होके ब्रेक होता है ब्रिटिश में, तो नीचे के लिए एक ड्रॉप लेगा। ये क्या लेन डाला था मैंने? रिट्रेसमेंट का ना? ये क्या क्या ओपन करता रहता है? तो यू कैन बाई इन ट्रेडिंग व्यू, यस, बट हमारा कोई भी ऐप उसमें है नहीं, ना आईजी है ना एक्सनेस है। बाइनेंस है, बट बाइनेंस में यूज ही नहीं करता, लेवरेज उतना देता ही नहीं है बाइनेंस। पार्टनर वन क्रिएटेड, पार्टनर टू क्रिएटेड, सॉरी क्रिएटिंग। अगर इस कैंडल या कमिंग कैंडल में ब्रेक नहीं होती है, market will tend to create a surplus liquidity towards the short. Okay, सब लोगों का ट्रेलिंग 29-19 के पास लेके आके रख लेना। एंड जिन जिन को चाहिए एक छोटा सा एंट्री देख सकते हो 29-26 तक ऑन द ब्रेक। एमसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2935.294 एंड 2960 इज दिस, द टारगेट्स आर करेक्ट। फर्स्ट आके 2930, सेकंड आके 2945, थर्ड आके 2960। ओके, सर ये जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस दिला दो कहीं से। मार्केट लगाता हो, कॉन्फिडेंस 60 रुपीज किलो, चेंज इन कैरेक्टर 30 रुपीज किलो। uh, this was just fun, guys. Don't take it seriously.
सर इंडियन सेशंस दिखा दो, वो नीचे नहीं आएगा, तुम उसको भूल जाओ। अगर नीचे आना है तो फ्यूचर में यहाँ पे एक बड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट होते हुए दिखना चाहिए। तभी। उससे पहले नॉट इंटरेस्टेड। लॉन्ग की तरफ ही है। सरप्लस वॉल्यूम बिल्ड होने दो, वॉल्यूम बिल्ड होने के बाद। You know what, sir? When we look at inducement 1, 2, 3, I think that inducement 1 is taking a retracement to provide me an entry, but then turns out to be inducement 3 and takes my SL. So इस सिनेरियो में हमेशा एक चीज याद रखना, अगर यू आर फॉलोइंग दैट रूल, इंड्यूसमेंट 1 रिट्रेसमेंट के लिए कैंडल क्लोज होने दो, राइट? ऑन द क्लोजर ऑफ कैंडल, ब्रेक किसी भी तरफ ब्रेक होने दो, लेट द कैंडल क्लोज, right? Post the candle closure, let there be a small continuity, right? At least give some time, that candle should show 1, 2, 3 minutes, okay, मैं sustain हो रहा हूँ. Then you can look for an entry, not directly. And हमेशा याद रखना, if there is a break and you see a retracement over here, what will market tend to do? Definitely it will take a reversal. If you are entering over here looking at a retracement, it will definitely hunt you down. Okay, just you have to focus on that. 8 more minutes on the candle closure, guys. No, Yogesh, not it. Okay, let it create a next round of allocation, उसके बाद ही आने दो इस पॉइंट ऑफ एक्शन तक, उससे पहले नहीं. Anyone has any doubts? Can you you guys can ask. Okay. Hope you got the point, Mavich. Check check. सर एक शॉट में ड्राइंग हटाओ ना. नहीं, ट्रेड चल रहा है, एंट्री देखनी नहीं है तो ये तो कर लूं. सर शॉर्ट ट्रेड लेने से पहले बता दीजिएगा. हम लॉन्ग की तरफ देख रहे हैं ऑन द ब्रेक. एड ऑन क्वांटिटी ब्रेक के बाद लॉन्ग की तरफ, शॉर्ट नहीं, नो शॉर्ट. Not interested in short as of now.
अंबिका थोड़ा गाना कम कर दो यार, वॉल्यूम कम कर दो. थैंक यू वर्षा. Hope you got the point, Mahavich. Right? Candle closure, retrace, continuity. Let the confirmation come. Okay, it's going in the direction. Then only you execute inducement 1. Else follow inducement 3. Four more minutes. मेरे हिसाब से inducement partner create करेगा. Partner 2. No spike in volume. यहाँ पे 1 2 3 छोटा छोटा कैंडल बनने दो, तब मजा है.
दिनेश टॉगलिंग करना बंद कर यार प्लीज. हाँ बीटीसी और इसके बीच में टॉगल करो, वो प्रॉब्लम नहीं. 5 मिनट में इतना बार 4, 1, 15, 20 क्या है वो. स्टॉप टॉगलिंग. Okay, sir. Thanks. I have to train my eyes for sure next time. Took SL and BTC 2 times in last few days. I also feel that inducement 3 is always followed in BTC. No, not like that. BTC में it's a combination of all three. तीनों follow होता है. Second partner created, guys. Right? If you notice, inducement range. Okay. So this box you can call it as inducement 3 drop. Okay. This inducement box is inducement 1 continuity. Okay. And this one is inducement liquidity grab move. So this one is inducement 2. Inducement break rejection continuity. It follows all the things. You just have to make sure that it's been in a right direction. See? Inducement break retest continue. SL देख के रख लेना उतना ही. All other things has been followed as per the requirements only. Guys एक बार refresh कर लेना. I think people are watching few minutes delayed. Live के ऊपर click कर दो. नहीं नहीं निफ्टी में स्लो एंड स्टडीली बढ़ा है प्रीमियम. There is no difference in gamma. Keeping in mind 200 points movement दिया है ना. Right? प्रीमियम में उतना स्पाइक नहीं है. प्रीमियम में जो स्पाइक आया है that is of 75 points.
या सो वी पेशेंस। अगर निकलना है तो निकल सकते हो। इंडियन सेशंस में आज के लिए 75 पॉइंट्स इज नॉट बैड। मैंने इंडियन सेशन बोला, बीटीसी नहीं बोला, ठीक है। अंबिका, एक्सनेस ओपन करो तुम्हारा। हाई मार्जिन एरिया कब है नेक्स्ट? ओके, कूल। शांति प्रस्ताव, यस। वेट पेशेंसफुली यार, आएगा। जब मूवमेंट आएगा, 100 पिप्स, 200 पिप्स, 300 पिप्स। जब ट्रेड ही नहीं है तो क्या लोगे ट्रेड? जो लॉन्ग में बैठे उनका भी अभी एसएल जाने वाला है, ट्रेलिंग एसएल। There is no big players in the market. कर दो क्या? नहीं नहीं, अगस्त आता, मजाक मत करो। प्लेइंग ओवर। 16 मिनट्स में कैंडल क्लोज हो रही है, होने दो उसको शांति से। सॉरी, नया कैंडल है।
Not every trade needs to be taken, guys. Chill. क्या मारामारी कर रहे हो 40 पिप्स के लिए? एक ट्रेड हो गया ना, और एक ट्रेड आएगा, आएगा जब ले लेंगे। जिनका यहाँ पे ट्रेड था लॉन्ग की तरफ, उनका क्लोजर भी हो गया अभी। सो वेट। TP1 is 22,532, guys. Okay. अंबी का वॉल्यूम बंद करो। टक टक। कितना पंच करोगे? रुक जा। यहाँ पे स्पाइक नहीं है, स्पाइक चाहिए मेरे को। ओके सर, थैंक्स। हो गया। In the inducement, the last green candle had a spike in the volume and now break downwards. कहाँ पे है 1 आवर में? कहाँ पे ब्रेक हुआ है वॉल्यूम? हल्का सा 15 मिनट्स में छोटा छोटा ट्रेड होगा वो, उतना ही। वी नीड ए मेजर मेजर ब्रेक। 1 आवर में वो भी चेंज होना है। इफ यू आर नोटिसिंग, 1 सेकेंड, what are you seeing? Volume is in the range. I need a break here. डेफिनेटली इस कैंडल में वॉल्यूम आई है, नो डाउट। ओके, बट अगर कंटिन्यूटी करना है, ये फिफ्थ की है, सिक्स्थ की नहीं है। इफ आई वांट ए कंटिन्यूटी, एटलीस्ट हाफ रेंज कैंडल आई नीड ओवर हियर। ओके, while considering demand allocation in the swing, if there are green candles in between, then how do we consider the demand allocation, the largest possible demand allocation? And we do ignore green candles altogether. You can please show it on the gold 15 minutes. Right? See, this was our major rejection point. अगर यहाँ से rejection लेता, well and good. नहीं लिया. So what is the one thing that you have to look? Small green candles is totally fine. These are the small rejection points, right? अगर 1 hour में same scenario देखते हो, the supply and demand gets changed. It's all put together one.
सो यहाँ पे उस रेंज में छोटा छोटा बीच में आ रहा है, दैट्स टोटली फाइन. You can drag and drop at every supply and demand change. Okay. हर एक supply and demand में you can look for it in 15 minutes. Just for an example, this was one of the scenarios. This was the second scenario. Second scenario completed. We multiplied at this range because it wasn't sustaining, right? Then it sustained. Then we multiplied the demand and then we kept it as 50%. Sir, is this rejection and continue? No. If it continues also, I am not interested. क्योंकि रनिंग में हम ट्रेड लेते नहीं है. That's a good red candle closure. No doubt. I don't have a placement for SL only यार इस point में. Running placement लेके चलूंगा तो I'll get closed out in the rejection only. 29.15 40 pips लेके चलूंगा तो rejection inducement rejection point of range है, वहां पे आएगा वो. It's not as per the risk management. So we'll let go the trade. Yes, I'll let go the trade. I'll get one more. I'll capture in that. सुबह का ड्रॉप कैप्चर किया है, राइट, लॉन्ग कैप्चर किया है. ये शॉट पकड़ना उतना नेसेसिटी नहीं है. ओके.
First SL after 6 months. What a message, huh? Thank you. कान तरस गए सुनने के लिए वो. अब मार्केट इसको डालेगा फोमो में. Get ready, guys. Finally, volume is started to pump. What a rejection, sir. वॉल्यूम पंप होना स्टार्ट हुआ है. गेट रेडी फॉर वन मोर गुड ट्रेड. Marju is saying great. वाह. थैंक यू मनोज. मेरे को 15 मिनट्स का वॉल्यूम में कुछ यही नहीं होता है. 1 आवर का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए. ये यहाँ पे ब्रेक होके सस्टेन हो गया ना नेक्स्ट 17 मिनट्स, मजा आ जाएगा मार्केट.
This volume should increase in next 17 minutes. Sir, what is the entry criteria? Where will we use inside candle liquidity taken plus entry? Is it? Yes. Candle closure. Next candle हल्का सा rejection लेके continuity. Main reason, the volume of the 1 hour should increase. और आना चाहिए 17 minutes में, तब भी मजा है, उससे पहले नहीं. Wait, this is not right sir, don't do this now. भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अगस्त्या से बात कर ले तू. Okay? Mahavich, clear? The only one thing that we have to be looking here is, sorry, break, let the volume increase through the previous one. मतलब ये जो green candle है, one second. So ये जो green candle है, इसके ऊपर volume break होके sustain होने दो. With that, let the 15 minutes candle create fully wick. Conversion चाहिए 1 hour में 15 minutes में at least half of the position में आके close होना चाहिए. Then only we can look for a next candle rejection and continuity. Okay. Doesn't matter. So let's go for 1 day prayer. Okay. So 5th, right? What do you notice? The entire scenario was same, right? There is no change till New York session. So it doesn't matter. Okay. Okay, sir. Hi, here you go.
नितेश वरुण को फोमो हो रहा है। वो पता था मेरे को। Sir, my message above, please check. What is the Exness partner code, sir? I am not able to trade gold on Delta Exchange. वर्षा भेज देना। Thank you, Varsha. Ten more minutes, guys. Beautiful. Continuity चाहिए मेरे को यहाँ पे। Yeah, this is what I wanted. Okay, done. All the new members, welcome to the stream. जो भी डाउट है पूछ सकते हो। सर नीचे का MC लेके रहेगा। So the number is coming at 2908. Okay. क्या बोला अगस्त्य ने? नहीं नहीं, LTD में मैसेज। हाँ ठीक। 2908 नहीं नहीं, गलत नंबर बोल रहे हो। He's playing you out, alright?
फिर से पूछ ले. Then what is the number? उससे ही पूछ ले. सही नंबर अभी बताएगा. पूछ. उसको बता, तू ट्रेड में है करके बता. Yes, correct. 2906 is the number. तू हुस्न परी तू जाने जहां खबर ये तो किसी का ऐड है. करेक्ट. यस, संतूर. Spoke with Agastya.
8 more minutes guys, जो भी डाउट है पूछ सकते हो. Sir, I have registered on the link. Do message Yogesh Telegram पे या WhatsApp में message कर देना. They will give you the instructions to get added into the link. Can you repeat? Please repeat action plan for gold. See, gold का clear cut था, हमें 50% rejection था, rejection चाहिए था यहाँ पे, right? With that rejection only continuity. हमें वो rejection नहीं मिला. Volume जितना चाहिए था उतना बढ़ा नहीं, right? So what will market do? Market will follow a number. What number? Swing high. Sorry. Swing high. क्या हो रहा है? Swing high, swing low. Subtract कर लो, ये mathematical number तक आएगा market अभी, which is 2906. Okay. And in BTC, what is the next thing that it will be doing? 1 hour closure red हुआ है, but in the scenario क्या हमारा previous allocation point ये वाला retracement cover up हुआ, right? उसके बाद ये वाला जो retracement है वो पूरा लेगा अभी, ये वाला. This will be the next moment of reversal point of action. Okay. So from 90,000 you could see a reversal. Till then this will be short. Gold 2907 and 2905, उस रेंज से आपको रिवर्सल देखने को मिलेगी. ओके. अगर सस्टेन होता है, डबल द डिमांड 50%. ओके.
100 pips earning post the previous SL. इंडियन सेशंस नो फोमो. अगर मार्केट में प्लान ऑफ एक्शन बिल्ड करती है तभी ही, उससे पहले नहीं. Gold, these are the levels of the reversal. BTC till 90,145 from that point of action, not prior to that. Okay. And अगर sustain होता है, volume increase नहीं होती है, then no reversal. That is no reversal for gold. BTC में त्रिशूल बनने दो रिवर्सल के लिए. Okay. And all the new members, welcome to the stream. जो भी doubt है पूछ सकते हो. Do comment. Protect your capital. Don't trade in FOMOs. Make sure execute the trades with an inducement or the insider candle. On the break of inducement 1, 2, 3 only will be your action plan. Right? मिलते हैं शाम में. तब तक के लिए everyone take care. Nitesh signing off.